इस जांच रिपोर्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए जब आपके अधिकारी पढ़ते ही नहीं। अभी भी अंग्रेजों के जमाने की सरकार चल रही है कि अधिकारी सोचते हैं कि कॉमन आदमी का दमन किया जाए, बिकॉज यू आर एम्पावर्ड टू सप्रेस द वॉइस ऑफ अ कॉमन मैन। आफ्टर सो मेनी years of independence, you are a public servant to serve the people, not to suppress them. Where is it? Should I call your commissioner? कुछ भी बहस करेंगे आप लोग, कुछ भी बात बताएंगे उल्टी सीधी। To mislead the court by saying that petitioners themselves had admitted that they were appointed as lab attendant and not as lab assistant. This पोजीशन चार्ट दीजिए वो आप। बट मैं वो पेज चार्ट नहीं, आपने ये क्वेरी की थी कोर्ट ने कि इनिशियल, मैं बताऊंगा, सब लिखूंगा इसमें, आपको चार्ट दीजिए। आई एम नॉट, मतलब व्हाट इज रिकॉर्डेड इन चार्ट कहाँ है प्लीज ये दीजिए। चार्ट मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग्स जो ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट मिसलीडिंग द कोर्ट। ठीक, सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑफ ₹5,000 as these petitions are pending since 2022 and respondents have not come out clean with their stand and have not enclosed the orders which they were bound to enclose along with their return। 5,000 रुपए हर केस में लगा दीजिएगा। 11 केस हैं। इन 6 केस में, इनके कुछ केस में तो पिटिशनर्स ने खुद लगाए अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। क्या वो सब वो लेब अटेंडेंट है जी? लेब अटेंडेंट है? दिखाइएगा, एक एक करके देखते जाते हैं, दिखाइए। वो दीजिए चार्ट आपका, इसमें खुद 60.1 दीजिएगा। चार्ट 60.1 दीजिएगा, बताइएगा। आपको लैब अटेंडेंट है? लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट नहीं है? लैब असिस्टेंट हो गया तो हैं? वो वही आप पॉइंट बता दीजिएगा कब बन गया वो लैब असिस्टेंट। काइंडली सी माय लाइफ पेज 30 P6। आप मूल दिखाइए मेरे को। मूल ये हाँ, क्या पेज लिखा? 30 हाँ सेकंड पेज है, पैरा 3 में। हाँ पढ़िएगा। दिनांक 15/11/59 के बाद जो प्रयोगशाला सहायक 15/11/59 के बाद, हाँ, अथवा प्रयोगशाला परिचारक में सेवक जी नियुक्त किए गए हैं, उनकी योग्यता मैट्रिक अथवा हायर सेकेंडरी है, उसे पुनरीक्षित वेतनमान वेतनमान रुपए इतने इतने का लाभ दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का नाम प्रयोगशाला सहायक होगा और वे तृतीय श्रेणी माने जाएंगे। Thereafter is treated as a सहायक प्रयोगशाला सेवा। जी बताइएगा। मैं काइंडली से हाँ ठीक है, रुक जाइएगा। At this point of time, Shri Rajkumar Tripathi submits that in WP 10192/2013, he has enclosed government order dated 23/12/76/27/76 as annexure P6, wherein the lab attendants who had passed matric or higher secondary examination were renamed as lab assistants. Full stop. Let a specific affidavit of the concerned commissioner be filed in this behalf, because there is a deliberate attempt on behalf of Shri Darshan Soni to mislead the court by saying that petitioners themselves had admitted that they were appointed as lab attendant and not as lab assistant. This पोजीशन चार्ट दीजिए वो आप। बट मैं वो पेज चार्ट नहीं, आपने ये क्वेरी की थी कोर्ट ने कि इनिशियल, मैं बताऊंगा, सब लिखूंगा इसमें, आपको चार्ट दीजिए। आई एम नॉट, मतलब व्हाट इज रिकॉर्डेड इन चार्ट कहाँ है प्लीज ये दीजिए। चार्ट मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग्स जो ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट मिसलीडिंग द कोर्ट। ठीक है बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा? एंड दिस पोजीशन इज रिप्लिकेटेड इन फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। टू क्लैरिफाई द क्लाउड्स, it is necessary to point out that the respondents have submitted that those who were appointed as lab attendants are not entitled for upgradation as assistant teacher, but those who were appointed as lab attendant and were possessing necessary qualification and have been upgraded to the post of lab assistant, a class 3 post, whereas post of lab attendant is a class 4 post, as is evident from annexure P6, then why a specific stand has not been taken by the respondents in their return in regard to annexure P6? बताइएगा P6 के बारे में क्या कहा आपने इंक्वायरी रिपोर्ट में? इंक्वायरी रिपोर्ट में P6 के बारे में क्या कहा है? मिस्टर सिंह, वेयर इज योर स्टैंड इन द इंक्वायरी रिपोर्ट अबाउट annexure P6? इसमें देखिए कहाँ उनको बोलिए डिस्टर्ब ना करें, मिस्टर मानसमणि वर्मा, उनको डिस्टर्ब ना करें अभी। सर इंक्वायरी रिपोर्ट के पेज 4 पे पेज 4 पढ़िएगा। छानबीन समिति गठन के प्रथम आदेश में कहाँ लिखा है? इसी केस का जवाब पढ़ रहे हैं ना आप?
R2 जो है जांच प्रतिवेदन जी, सेम R2 R2 में कहाँ लिखा है? छानबीन समिति के प्रथम आदेश में लिख तो रहे हैं आप, इन नियुक्तियों से न होकर मात्र प्रयोगशाला सेवक से इतने पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति से है। अब आप बताइएगा, जब 1976 का खुद ही आ गया सर्कुलर आपका कि जो क्वालिफाइड हैं दे विल बी ट्रीटेड एज क्लास 3 लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, फिर उसके लाइट का उसका कहाँ जिक्र किया है आपकी इस जांच कमेटी ने? उसके बाद जो इसमें बताइए पहले, रिपोर्ट का क्वेरी हो बताइए, इसमें कहीं आया है? नहीं सर इसमें नहीं है। तो फिर इस जांच रिपोर्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए जब आपके अधिकारी पढ़ते ही नहीं? अभी भी अंग्रेजों के जमाने की सरकार चल रही है कि अधिकारी सोचते हैं कि कॉमन आदमी का दमन किया जाए, बिकॉज यू आर एम्पावर्ड टू suppress the voice of a common man. You have yet not realized that after so many years of independence, you are a public servant to serve the people, not to suppress them. Where is it? Should I call your commissioner? कुछ भी बहस करेंगे आप लोग, कुछ भी बात बताएंगे उल्टी सीधी। Shri Singh, Additional Director Public Instructions, admits that in the inquiry report annexure R2 dated 4/8/2011 there is no mention of annexure P6, though on internal assurance given to the Legislative Assembly was in regard to appointment of lab attendants to the post of assistant teacher science and not with any other issue. That is, it is not concerned with the issue of promotion of lab assistants to the post annexure P6, which is the order of the department. Full stop. This order has been passed in the name of and by the order of the governor, and its copy was endorsed to all the divisional education superintendents and district education officers. Let principal secretary of the department file his/her personal affidavit that how they can be oblivious of government orders of 1976 and make incorrect pleadings before the High Court, and why exemplary cost be not imposed on the state for making incorrect representation before the High Court, and that too through their government advocate and the officer of the level of the additional director. Let affidavit of the principal secretary be filed within 7 days. It is made clear that if affidavit is not filed, then this court will be constrained to call for the personal presence of the principal secretary of the school education department. लगा लीजिएगा उसी में, ऊपर लिख लीजिएगा दैट क्या हुआ इसको, Mobilize me.